नमस्कार, एमिशन प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आप सभी का पसंदीदा शो जो इन्फॉर्मेटिव भी है, इनोवेटिव भी है, अट्रैक्टिव भी है। क्यों? क्योंकि ये आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ शो है। इस शो के जरिए हम हमेशा रविवार के दिन कोशिश ये करते हैं कि आपकी जिंदगी के जो बेहद बेहतरीन मुद्दे हैं उनको हमारे शो में शामिल किया जाए, जिनको हम समझते तो हैं लेकिन शायद अपनी जिंदगी में अमल नहीं करते हैं, और इसी वजह से कई बार कड़वाहट आ जाती है, कई बार दुख आ जाता है, कई बार रिश्तों में खटास आ जाती है, कई बार नेगेटिविटी आ जाती है। इन सब से कैसे बचा जाए, कैसे अपनी जिंदगी को खूबसूरत किया जाए, इसलिए हम हर रविवार ये शो लेकर आते हैं जिसमें हमारे साथ मौजूद होती हैं एक ऐसी शानदार गेस्ट जिनकी मौजूदगी से हमें ये महसूस होता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। उनकी बातों को सुनने के बाद, समझने के बाद हमें ये जानने को मिलता है कि हमें जिंदगी से प्यार करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मिली है। कहते हैं कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, और हम सभी एक दूसरे को दोष देते हैं मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। तो ये इंसान की फितरत है, दूसरों में गलतियां तलाशना, दूसरों के दोष को देखना, लेकिन अपने अंदर व्यक्ति झांकता नहीं है। और हमारे शो के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को पहचानें, अपना इंट्रोडक्शन अपने आप से कराएं। इसी से जुड़े तमाम मुद्दे हमारे शो में शामिल रहते हैं। और आज स्वागत करते हैं मरियला ज़ैनोलेटी, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एक ऐसी बेहतरीन गेस्ट हैं जो सिस्टमिक साइकोथेरेपिस्ट तो हैं ही, पिछले 10 सालों से जो भारत में रह रही हैं और लगातार भारत के लोगों के साथ उन्होंने इतने मधुर संबंध भी बनाए हैं और अपनी बातों के जरिए उनके दिलों तक पहुंचती हैं, जो हमें नई जिंदगी जीने का रास्ता देती हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं, हमारे साथ मरियला ज़ैनोलेटी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। Mariella, welcome to the show. How are you? How are you doing? Hi Khushbu. All good, and you? Very nice, wonderful. और आपसे मिलने के बाद तो we are very good. Thank you so much for being a part of our show. Mariella, we are talking about gratitude basically. कई बार होता है, gratitude का मतलब ये होता है किसी को धन्यवाद देने की इच्छा, यानी कृतज्ञता दिखाना। किसी ने हमारा कोई काम किया, हमसे अच्छा व्यवहार किया, तो हमें उसका टेक्निकली धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन यकीन जानिए कितने लोग हैं हमारे भारत में जो हमारी अच्छी करने पर हमें धन्यवाद देते हैं। हम किसी के काम आते हैं तो कितने लोग हैं जो हमारा शुक्रिया अदा करते हैं, ना भी करें तो कितने लोग हैं जो हमारे बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। लोगों की छोड़े, ये बात हमें अपने अंदर शुरू करनी है। इसी को लेकर आज की ये चर्चा रहेगी। सो मेरियला, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्रेटिट्यूड। सबसे पहले आपसे जानेंगे, व्हाट इज ग्रेटिट्यूड? क्या है ये? धन्यवाद देने की इच्छा, कृतज्ञता, किसी के प्रति प्रकट करने की इच्छा, क्या है ये? So is the feeling of being grateful and thankful. You know, when somebody gives you a present, a gift, and you really feel good because the person is giving you something, that's the feeling that I'm talking about. And of course, it's a feeling that we feel when somebody gives us something, but we can also express gratitude. So we can be the ones who are actually thinking, oh, what is this person done to me? So how can I be grateful? And we think, oh, it's so natural, so normal. Everybody say thank you, everybody is grateful. But I believe it's very important to keep it in mind, because even for me, today that I knew we were going to talk about gratitude, I thought, oh, maybe I should send some messages to friends and family and being grateful to them. And why is it then important? Because it helps us in healing. It brings up more positive emotions. And when we are grateful, that puts us in a better place in terms of well-being. And when we are there, we take care of ourselves more. So it's also being grateful help us also with health. And when we are in a good health and in a good spirit, of course, we want to implement the good practice in our life. So that is like a cycle that help us, but not only us, but also the people that we are expressing our gratitude to.
तो दिस इज़ वेरी वंडरफुल. ग्रेटिट्यूड होना, किसी के प्रति कृतज्ञ होना, उसको थैंक यू कहना, ये बहुत अच्छी बात है और ये आपको दूसरों की नज़र में हम्बल भी बनाता है, आपके स्टैंडर्ड को भी मेंटेन रखता है. तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका कभी भी कोई काम आए या कोई आपके लिए कुछ अच्छा काम करे तो उसको थैंक यू कहना ना भूलें, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जो ज़िंदगी में खुशियों को बढ़ाने का काम करती हैं और दूसरों की नज़र में आपके जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, उसको बूस्ट करने का काम करती हैं और आपके एरा को भी पॉजिटिव बनाती हैं. तो चलिए बढ़ते हैं आगे और इसी पर चर्चा करते हैं, क्योंकि मैरिएला लगातार हमारे साथ मौजूद रहती हैं जो हमें ये बताती हैं कि किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को बदलाव करके आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल कर सकते हैं. सो मैरिएला, एक और बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की जब हम बात करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव, देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ, of the nature of a human being. So why it is so easy to focus on the negative instead being positive, I mean of the positivity, because हम नेगेटिव के बारे में बहुत जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव चीज़ें हमारे ख्याल में नहीं आती हैं, हम उन पर ध्यान नहीं देते. सो टेल मी समथिंग अबाउट इट. So if you think, we have been wired to notice the threat, because we need to protect ourselves, so the risk in life, so that's how we were born. So that means that we have the tendency to focus more on the negative. Then also the culture plays a role. In every culture we are kind of paying more attention to what we are lacking more than what we have. So we really make it a point to focus on the positive. And the more we focus on the positive, the more we spot, these moments where positive things are happening, the more we are able to use, to use our gratitude, because gratitude is like a muscle. We need to use it so that it becomes stronger. By noticing positive things, we are doing that. And the more we do that, the more, as I said, we will have positive emotion. And when we're grateful to others, that will also make other people more grateful. So that means that we start a gratitude cycle. Because if I say something nice to you and I'm grateful to you, Khushbu, I'm sure you will be more prone to say back to you. Exactly. It's like when you smile, people then, if you smile, people are more prone to smile back. It makes us humble also. Yes. Yeah. So the idea is to practice more gratitude, because that will improve our emotional well-being and our health, as I said before. Yeah. सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट एटीट्यूड जो हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए. और जैसे मैरिएला ने कहा कि हम लोगों को हम्बल होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी का धन्यवाद करते हैं तो आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, ये ह्यूमन नेचर है. अगर आपने किसी को थैंक यू बोला है तो वो पलट कर आपको न कभी गुस्से में बात करेगा, न कभी आपकी बेइज्जती करेगा, वो हमेशा पलट कर आपको ग्रीट करेगा, आपका धन्यवाद करेगा. और इसी तरह से ये एक सर्कल है, एक साइकिल है जो लगातार खुशियाँ लेकर आगे बढ़ती रहेगी. तो इसलिए हम्बल रहिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपना रखिए, जिसके माध्यम से आप अपनी ज़िंदगी को, अपने आसपास के समाज को, अपनी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा खुशहाल बना सकते हैं. सो मैरिएला, टुडे वी आर डिस्कसिंग ऑन ग्रेटिट्यूड एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ह्यूमन लाइफ. तो बात अगर हम करें धन्यवाद देने की इच्छा, कृतज्ञता की हम बात कर रहे हैं, हम्बल होने की हम बात कर रहे हैं, व्हाई इज ग्रेटिट्यूड इज इम्पॉर्टेंट for oneself? My Hindi is still basic, but I've heard you saying something around dhanyavad and thank you, but gratitude is not only that. Yes. Okay. Yes, gratitude means that you actually pay attention and think what has that person done for me, and how can I give back by sharing some feedback. There is not just the thank you bit, it's also you should mention what the person has done, why do you appreciate what the person has done, and actually feel that the feeling good factor is not just the thank you that we automatically. Now we are not feeling thank you, but we are saying it. It's not about word. Yes, you really need to feel it, and also give some substance to that. Why are you grateful? And I believe it's very important to actually spend time and sometimes write it down, because we forget, we take things that people for granted. So be thankful and grateful, even for the simple things in life, or this is very useful when we are in some, we're struggling, we're going through some hard time.
think of what we can be grateful for, because then we'll shift your brain, then will get used to move in that other direction. That is not only complaining and see what we're lacking, but also what we have. दैट इज़ वेरी नाइस। और देखिए कितनी अच्छी बात है मैरिएला ने हमें बताई है इस एपिसोड के माध्यम से। चर्चा का विषय हमने ऐसा उठाया है जो बहुत ही आपको सुनने समझने को कहीं नहीं मिला होगा। कई लोगों को लग रहा होगा कि ये तो हम जानते हैं, वाकई जानते सभी लोग हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब भी आप अपने अंदर से तलाशने की कोशिश कीजिए कि जानने के बावजूद आप उस पर अमल कितना करते हैं। आप कितना लोगों को थैंक्स गिविंग इज अ वर्ड जो हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए, और सिर्फ शामिल नहीं करना चाहिए, उसको महसूस भी करना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति आपके प्रति आभार व्यक्त कर रहा है, आपका अच्छा कर रहा है, तो सिर्फ शब्द के लिए थैंक यू नहीं कहना है आपको ये महसूस करना है कि उस व्यक्ति ने ऐसा मेरे लिए क्या किया है, मन से फील करना है। इट इज़ ऑल अबाउट फीलिंग्स। तो उन्हीं फीलिंग्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और मैरिएला लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो आपके विचारों पर शोध करती हैं और फिर वो सवालों के माध्यम से आप ही तक पहुंचाने का काम करती हैं। बढ़ते हैं आगे, चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर से जुड़ा हुआ टॉपिक है, उनके बिहेवियर से जुड़ा हुआ टॉपिक है, जो आपको भी और हमें भी, जी हाँ, हमें भी अपनी जिंदगी में शामिल करने की बेहद जरूरत है। क्योंकि नेगेटिव होने में 1 मिनट लगता है, गुस्सा होने में 1 मिनट लगता है, लेकिन किसी के प्रति कृतज्ञ होने के लिए हमें बहुत सोच विचारने की जरूरत पड़ती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें गुस्सा होने के लिए समय लेना चाहिए, हमें नेगेटिव होने के लिए सोचना चाहिए, जबकि किसी के साथ मुस्कुराने के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए, उसके साथ खुशियों के पल बिताने के लिए हमें सेकंड थॉट देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सो मैरिएला, हाउ टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, क्योंकि बहुत लोगों को आदत नहीं होती है, इट्स नॉट इन आवर नेचर किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड को अपनाना। सो हाउ टू प्रैक्टिस इट? Yes. So we should appreciate, as we said, we should appreciate what we have, and we should first of all begin. Now we're talking about this. I'm sure people will start thinking more in this direction, and they might also want to do it. So first of all, you need to begin, and then you need to find gratitude also in situation where there are challenges. It's not just about, of course, it's very easy when everything is smooth, everything is going well, but in challenges, because that's when you see the difference. If you start showing gratitude when you are facing some challenges, you will learn a lot. You will be able to face the challenge with a different attitude. And it's also about giving back. The more you give back, the more you give to yourself as well. So this is another important point. It's not just that something that we do for ourselves, but because we want others to feel good as well. And as we said before, yes, you can say thank you, but it's also about giving some more how do I say, inputs, which will make the person know why we're appreciating her or him, and telling what they did, acknowledge the efforts that they made, and describe how you benefit from that. So remember, it's not just saying thank you, it's an exercise that the more we do it, the more it will become natural. So, sometimes people say, oh, this is not my, my nature. Yeah, but what is nature? It's something that we learn. So we can learn to be more grateful. That's very wonderful. कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमें जानने को मिल रहे हैं Mariella, because the time is going on, so we need to know a very short and crispy answer of my another question, and this is gratitude to yourself. कैसे हम अपने आप का धन्यवाद करें? सुनने में अजीब है, कोई व्यक्ति अपने आप का धन्यवाद कैसे कर सकता है, but here is a very important question. अपने आप का धन्यवाद कैसे किया जा सकता है? How can we do that? Yes. So what do you do where you want to feel good? What do you do to yourself? Sometimes, I love to talk to the people, so I'm so humble. I think so. That's why I do the same, yes. So, it's also important to know what makes you feel good. So, as you said, maybe you go and talk to people. For some people, it's going for a massage or do something which, makes what they love. Yes, makes you feel good, and it's, you give yourself love. And then you can make a list of things that you're grateful for, maybe things that you have done or things that you have. Then meditate. We always say this. Meditate is also very important to give ourselves some gratitude.
And you can have a gratitude journal. I told one of my clients at night to think of 3 things she's grateful for. And she's also involved her children. So before going to bed, they all say what they're grateful for, something that happened during the day. And the funny bit is that it was easier for the children to do it. So you see, sometimes adults find it more difficult. We focus on the what didn't go well or what we didn't do well during the day, more than being grateful for what we have done. And then we can also list our good qualities. You know, that's also very important. This is super difficult. When I ask my client to do some exercise or to tell me, you know, that at least 3 qualities, they always find it difficult. Even people in my team, actually, we did an exercise the other day, and they're like, oh, I should not say that. Other people should tell me. But why not? I mean, you need to be self-aware and you need to appreciate yourself for who you are. दैट्स वेरी वंडरफुल, वेरी नाइस। और यकीन जानिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये शो हमने हल्की फुल्की चर्चा से शुरू किया था, लेकिन चूंकि ये हमारे और आपकी आदतों पर आधारित था, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। तो कोशिश कीजिए, हम्बल रहिए, लोगों से जितना हो सके उतना सहज तरीके से मिलिए, और अपने बारे में ही नहीं बल्कि समाज के बारे में भी सोचिए कि कैसे हम्बल रहकर कैसे आप उनके प्रति ग्रेटिट्यूड यानी धन्यवाद देने की सामर्थ्य या कृतज्ञता को बढ़ाकर जीवन को और ज़्यादा खूबसूरत कर सकते हैं। सो मैरिएला, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। और इसी तरह से हमारा ये शो आपके सामने आता रहेगा। रविवार को 11 बजे इसका समय निर्धारित है, जिसको आप MH1 प्राइम के माध्यम से देख सकते हैं और ज़िंदगी को खुशहाल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।